In this video that you can see, and you can see it for yourself, the Bihar Chief Minister yanks off a woman's hijab. This while he was handing over appointment letters to the Ayush doctors at an event. This lady that you can see in a hijab, there you have it. He yanks it off. She's a doctor. She was about to get her appointment letter for Ayush doctors at the event from the Chief Minister. But right after he hands her the certificate, Nitish Kumar points to her hijab, and then you can see him there yanking it off her face. The 74-year-old Chief Minister was seen motioning to the woman doctor. You can see that bit as well, to remove her hijab. But even before she could react, even before she could say anything, he can be seen reaching out and pulling it down. Well, the video also shows Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary trying to stop Nitish Kumar. You can see his hand suddenly coming up, trying to stop the Chief Minister. He couldn't, however. Well, the Chief Minister's Secretariat, where over 1,000 appointment letters were being distributed. But this video shows Nitish Kumar removing the woman's headscarf has drawn sharp criticism from the opposition, understandable. Well, the INDI bloc has slammed Nitish Kumar, calling it a vile act that disrespects women. Well, the RJD and the Congress have shared the video. The RJD has questioned the Chief Minister's mental state as well. The Congress has called the act beyond forgiveness, demanding that the Chief Minister must resign. The AIMIM also has questioned the state of the woman across Bihar, asking if the 10,000 rupees being given to women was at the cost of such disrespect. The party has said that such an act was absolutely unacceptable, as it disrespects and humiliates Muslim women, asking Nitish Kumar to apologize to the entire Muslim community. कि मेरे लिए चिंता का विषय उससे गंभीर है, क्योंकि अगर आप उस विजुअल को गौर से देखें तो उस विजुअल में माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा जितने भी लोग थे वो क्षण भर के लिए अनसेटल हो गए, असहज हो गए। मैं पीछे एक डिप्टी सीएम को देख रहा था, उन्होंने हाथ तक पकड़ने की कोशिश की। ये पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है और कि इस प्रकार के विजुअल्स संदेश अच्छा नहीं देते हैं और जाहिर तौर पर मैं कतई नहीं मान सकता कि इससे बिहार का गवर्नेंस और द आइडिया ऑफ गवर्नेंस प्रभावित ना होता हो। नहीं, बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने किया है और उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई भी महिला किसी भी वेशभूषा में हो, इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से उनको अपमानित करना, उनके बुरखे को नीचे खींचना, ये सही नहीं है। अगर आपको उनको कुछ सिखाना था, कुछ बताना था, तो वो बाद में भी किया जा सकता था, पर ये तो पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करने का हैरेसमेंट होता है। इसको हैरेसमेंट कहा जाता है। ये करना बहुत ही गलत है, शर्मनाक है और उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये मैं शब्दों पे बखान नहीं कर सकती, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपने एक महिला का जिस तरफ से हिजाब को, मैंने भी वीडियो देखा, हटाने की कोशिश की, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और अगर एक महिला होने के नाते ये आप किसी का हिजाब या सोचिए कि कोई दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, आप उसको हटा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग क्या ही कहें, उनको खुद पे अगर ग्लानि हो तो उनको खुद रिजाइन देना चाहिए। ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मानसिक रूप से बहुत संतुलित तो है नहीं और कई बार हरकतें उन्होंने किया इस तरह से, तो एनडीए के लीडर ही इसी तरीके से हैं। Breaking news which is coming in amid the video which shows Nitish Kumar pulling down a doctor's hijab. Now JDU, his party, has offered a bizarre defense. The JDU claims that this is Nitish's way of showing affection and love, saying that the opposition doesn't understand this way of showing love. Watch this and decide for yourself. एक वही व्यक्ति के चेहरे पर बिहार में जो जबरदस्त, जो आपने देखा है, जो समर्थन प्यार मिला, बहुत बड़ा समर्थन। मुझे लगता है कि देश में ये अलग स्टेट ऐसा है कि जिस टाइप का वन साइडेड समर्थन प्यार से नीतीश कुमार चेहरे पर मिला है, उनको समझ में नहीं आ रही है
उनके होश उड़ गए उन लोगों के। मैं बताना चाहता हूँ ये हरकतें लोग न करें। ये हमारे समाज की बेटी है, उस बेटी को सम्मान मिला है, इस पे वो लोग न ऐसा करें। धर्मगुरु भी जो है मुस्लिम धर्मगुरु, उसके तरफ से लगातार टिप्पणी आ रहा है। बातें मैं करता हूँ, हिंदुस्तान है, ये देश है, ये संस्कारों का देश रहा है। हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब की ख्वाहिशें को किसने पूरा किया? उनकी ख्वाहिशें क्या थी? उनकी ख्वाहिश थी कि बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत, एक अच्छी जिंदगी सुनिश्चित करना। तो उनकी ख्वाहिशों को अगर किसी ने भी पूरा किया है ना, तो उस शख्स का नाम श्री नीतीश कुमार जी है। और इस विषय पे सवाल कौन उठा रहा है? सवाल राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जिनके शासन काल में इमामगंज से लेकर के अनेक जगहों पर अल्पसंख्यक समाज की बेटियों और महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार, बदसलूकी की गई, और ये मुक्त दर्शक बन करके देखते रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संपूर्ण जीवन धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और महिला सम्मान के लिए समर्पित रहा है। Well, let me go across to Saket, who's joining us. Mohit Bhatt also joins us. But Saket, I'm going to come to you first. ये बात समझ नहीं आई जो जेडीयू हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये रिपिंग ऑफ हर डिग्निटी नहीं है, कि ये एक प्यार का संदेश है नीतीश कुमार टुवर्ड्स हिज डॉटर। ये कौन सा वाला डिफेंस है जो डिफेंस हो ही ना? और देखिए, बिल्कुल डिफेंस इसे जेडीयू के तरफ से जरूर किया जा रहा है इस पूरे वीडियो को लेकर। और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी है जब जेडीयू ने इस पर मुख्यमंत्री का बचाव किया है। जमा खान जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, मुस्लिम समाज से वो आते हैं, तो ऐसे में उनको आगे किया गया है पार्टी की तरफ से। और वो ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस महिला से जिनका नकाब हटाया गया, उनसे ये कह रहे थे कि आप डॉक्टर बन चुकी हैं, तो अब ये सब हटाइए और पूरे दुनिया को और देश को अपना चेहरा दिखाएं। तो ये इस मोड़ पर इस पूरे मामले को लाने की कोशिश जो है वो जेडीयू के तरफ से हो रही है। लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि किसी महिला के सम्मान से इसको जोड़कर बता रहा है विपक्ष कि किस तरह से महिला के सम्मान के साथ मुख्यमंत्री ने खिलवाड़ किया है। एक सरकारी मंच जो जहां पर इन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, वहां पर इस तरह से उन्होंने किया कैमरे के सामने। इस पर सियासत जरूर चल रही है, लेकिन बचाव निश्चित तौर पर जेडीयू के तरफ से हो रहा है। और नीतीश कुमार को लेकर लगातार इस तरह के सवाल पहले भी उठे हैं। विधानसभा तक में उन्होंने जो भाषण दिया था, एक आपत्तिजनक भाषण उनका था, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था पूरे देश में। और उसके बाद एक कई इस तरह की घटनाएं घटी है। तो ऐसे में जो उनके पास है, क्योंकि जो आप वीडियो देख भी पा रहे हैं, तो उसमें सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो उनके ठीक पीछे खड़े हैं। और जब वो उस महिला के चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, चूंकि ये स्वास्थ्य विभाग का पूरा कार्यक्रम था, तो वो भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की। लेकिन जब ये घटना घट गई, तो अब जेडीयू के तरफ से बचाव जो है वो नीतीश कुमार का किया जा रहा है। और इसे एक प्यार मोहब्बत से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि किस तरह से जो अल्पसंख्यक समाज की जो बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर तक बन रही है, और उनको अगर चेहरा दिखाने की बात की जा रही है तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। तो इस पर सियासत तेज है। हमने कोशिश की जो महिला है उनसे बात करने की, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है, अपना पक्ष वो नहीं रख रही है। लेकिन कोशिश हमारी हो रही है कि उनसे भी बात करें कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था, नीतीश कुमार ने क्या कहा और किस तरह से वो इस पूरे मामले को देखती है। तो ये देखना होगा उनसे जब बात हमारी होगी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट वुमन हु वाज पुट इन अ स्पॉट रियली फेल्ट लाइक. बट एज Saket rightly pointed out, if the JDU feels that this was a sign, a show of affection by the chief minister, why did Samrat Chaudhary try to hold back Nitish Kumar's hand? Why did the other minister, Mangal Pandey, who was there on the other side of the chief minister, also try to hold back Nitish Kumar? If they felt it was fine, his own ministers, his own deputy chief minister were trying to push his hand away. So does JDU's defense still stand, or should Nitish apologize? Well, the BJP has now tweeted a video in their defense of the former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot. There's an old video, remember, where he can be seen pulling the ghungat of a woman. But the BJP has posted the video to draw a parallel and question selectivity. So the question is, do two wrongs make a right? Yes, indeed, Gehlot did it in that year as well. BJP is citing it. But was that right? And if that was not right, then is this right, what Nitish Kumar did? That's the question.
Meanwhile, more breaking news which is coming in. The storm over Nitish's hijab video continues to brew. Mehbooba Mufti now has waded into this controversy, saying that she's shocked by Nitish Kumar's act, says that it is normalization of humiliation, saying it's time for Nitish Kumar to step down. Remember, questions have been asked about Nitish Kumar's mental state as well. If he is mentally stable, by the opposition parties who say that he needs to be treated as well. You have the post of Mehbooba Mufti there on your screens. I'm going to quickly tell you what it says. Saying that having personally known and admired Nitish ji, I was shocked to see him pull down a young Muslim woman's niqab. Does one attribute it to old age or normalization of humiliating Muslims publicly? The fact that people around him watch this horrific incident unfold in some form of an entertainment is even more unsettling. Nitish Saab, perhaps it's time for you to step down. Let me go across to Mohit Bhatt, who's joining us. Mohit, normalization of humiliating Muslims publicly. Those are harsh words coming in from Mehbooba Mufti. Well, Meghna, first thing first, this act of Nitish Kumar, it cannot be justified, it cannot be defended. So the JDU should also keep in mind that this is something which is very shocking, and it doesn't suit the stature of leader like Nitish Kumar. But what we see is that how Mehbooba Mufti and a few other leaders are coming out. They are trying to give it a communal overtone. This is also something which should not be done. It's about women's integrity. It's about her hijab, and in all righthood, her integrity has to be maintained. This is something which cannot be justified. Nitish Kumar has done something which is very wrong, and JDU, instead of coming out giving excuses, should come out and apologize. And also, when the BJP puts out a video of Ashok Gehlot, that also doesn't make that that doesn't also justify this particular act of Nitish Kumar. And as you rightly pointed out, two wrongs cannot make a right. So clearly, first thing first, Nitish Kumar has done something which cannot be justified. Either an apology should come or an explanation could come from Nitish Kumar or from his social media. What JDU leaders are saying as of now, that this is something which is very hard to digest. Now, secondly, what we see is that Mehbooba Mufti has come out and she has tried to give it a communal overtone, which is also not right, because we as a channel are speaking about integrity of a woman, respect of a woman, and how she was demeaned, and in a way those visuals are very awful, Meghna. But then giving it communal overtone, trying to incite people, is something which also should not be done, given the fact that how our politicians have this responsibility. Absolutely, it's about power which does not give you the right to affront any dignity, any woman's dignity, be it from this community or the other. This is unacceptable, which is why we are saying Nitish Kumar must apologize for this action of his. And it's not really about politics, nor is it about communal politics. Thank you so much, both of you, for joining us, Saket as well as Mohit. With that, let's move on in the bulletin. The other big story which is coming out of the parliament, well, the centre is planning to overhaul the 2-decade-old National Rural Employment Scheme, or